अभी अभी मैंने वहाँ से जंप किया है उस फॉल के अंदर। Yeah, I'm shooting you. What? Oh, sorry. Yeah, he's shooting you. How was the whole experience? Yeah, they were trying to pee on me every time I caught them. It's their defense mechanism, I guess. No one is going to stop me from jumping in the water. Yes, I can go there. It will be dangerous. Microbial contamination, who cares? Yeah, you come from India. Yeah. So if we take this route, we can go to this waterfall first. Be careful, okay? Good morning everyone. बहुत ही मज़ेदार रहा भाई कल का तो दिन, और आज हम एक वाटरफॉल पे जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पे तौरंगा में बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट की एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है स्पेशल मेंशन। तो वहाँ पे आए हैं, तो बस अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन विल हेड टू आवर वाटरफॉल एंड maybe I'll also try to go for pedal boarding again today. I really loved it. Okay, let's see what we can do depending on the time and the weather. See you guys. The water is polluted. Swim in these waters. Microbial contamination, who cares? Yeah, you come from India. Yeah, I mean, what the hell? To an Indian guy. River water in this area has a high risk of microbial contamination. It is therefore not recommended to swim in these waters. Who cares? We are at Kaiate Scenic Reserve and Rerekawau Falls. That's the map. And let's go. Let's go. No one is going to stop me from jumping in the water. Stop you. What were you saying? Huh? No one can stop you. Boom. Why do you do that to me? See, he's showing violence. Every now and then. Every now and then. Shut up. Can you hear that? The fall. Yeah, this is the sound of the waterfall. Sound of the waterfall. I like those flowers. They're all there on our way here. So now we are here. Okay, so if we take this route, we can go to this waterfall first, and further on we can see this one. I can see the waterfall. Oh, someone get excited. और यहाँ हमारे सामने आया पहला वाटरफॉल व्यू पॉइंट। ये कुछ इतना खास वाटरफॉल था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा यार ये पानी इतना नीचे तक जा रहा है, कुछ ना कुछ तो व्यू यहाँ पे बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा चलो यार यहाँ पे एक बार ड्रोन उड़ा के देख लेते हैं क्या नज़ारे हैं। और भाई क्या ही नज़ारे दिखे, एकदम होश ही उड़ गए। देखो आप लोग भी और बताओ देख के आप लोगों को कैसा लगा ये नज़ारा।
And then once we saw what's down there through the eyes of our drone, we couldn't stop ourselves. हम रोक ही नहीं पाए अपने आप को, इतनी तेजी से नीचे भागे कि चलो यार, जो नज़ारा अभी ड्रोन से देखा है वो अपनी आंखों से देखना है. विश्वास ही नहीं हो रहा था. Maybe we fly again. Which baby? This way. Yes! Let's get a photo! It's there, anywhere! Yes, I can go there. It will be dangerous, but definitely over here. Hey, looking so nice. और जब हमने ये वाला वाटरफॉल देख लिया था तो हमारी हिम्मत और बढ़ी और हमने कहा यार और आगे चलते हैं और जो दूसरा वाटरफॉल व्यू पॉइंट है उसको भी चेकआउट करते हैं. वो भी बहुत ही खूबसूरत रहेगा, पक्की बात है. और फिर देखो आगे हमको क्या दिखा. Oh, see, good that we came here. Oh, this is good. This is the one in the pictures. Yeah. That we saw in the video. Whoa! Majestic! That's a fucking majestic! Wow! Hey! Look! That's good! Yeah. There it goes, till there. Nowhere. That's the way to go down. Yeah. Let's go. Easily. It can be slippery. Hey.
Okay, time to fly the drone. Fucking beautiful. And then I decided to jump in this beautiful fall. थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ी, क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि मेरे सामने कोई कूद तो रहा नहीं था और मुझे पता नहीं था कि ये कितना गहरा है, लेकिन फिर भी जुटाई हिम्मत और कूद गए। और मैं आपको ये फीलिंग अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर पाऊंगा जो मुझे महसूस होती है जब भी मैं कोई वाटरफॉल, लेक या कोई भी वाटर बॉडी देखता हूँ जिसमें मैं जंप कर सकता हूँ। अरे यार फीलिंग्स पे जाओ यार, फीलिंग्स पे, शब्दों पे नहीं। मजा आ गया यार। अभी मैंने वहां से जंप किया है उस फॉल के अंदर, वहां से। क्या ही मजेदार जगह थी यार, बहुत ही डीप है, so much fun। और वहां पे स्विंग भी थी, लेकिन वो टूटी हुई है, मतलब बहुत छोटी स्विंग है तो उसका वर्थ नहीं था, अदरवाइज वो भी करता। पर मजा आ गया यार। तो भाई अपना वाटरफॉल से आने के बाद अब आ गए हैं कुछ खाने के लिए। इसके बाद कोशिश करते हैं दोबारा पैडल बोर्ड के लिए जाएंगे। लेट्स सी। Let's start eating. Eat it and tell me how is it. Yummy, yummy. और ये तोरंगा के फेमस बामीज खा के हम चल पड़े पेडल बोर्डिंग करने, क्योंकि कल जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ था पेडल बोर्डिंग का, उससे मैं उभर ही नहीं पा रहा था, तो इसलिए दोबारा फिर आ गए। Yes, how blue the sea is, how sunny it is. और फिर थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने के बाद मैं उतर गया समुंदर में, समुद्रों की लहरों से टक्कर लेने। ऐसे समय में मुझे एक डायलॉग याद आता है कि कश्तियाँ लहरों से टकराएंगी तभी तो किनारे नसीब होंगे। बस हमने भी अपनी कश्ती को खूब टक्कर मारी इन लहरों के साथ, थोड़ी सी बैलेंसिंग की कोशिश करी, जो कि मुझे सब बोर्डिंग में काम आएगी और आई भी, जो कि आप आगे के वीलॉग्स में देखोगे, क्योंकि ये ले जाकर मैंने गिस्बन में जो आने वाला मेरा वीलॉग है उसमें मैंने सर्फिंग भी की है और काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी रहा।
फिर ये थोड़ी बहुत ड्रोन फुटेज कलेक्ट करने के बाद बारी थी कुछ शी वेल्क्स, शी शेल्स, ये सब कलेक्ट करने की। और इसी के इंतज़ार में तो ये तब से खड़ी थी कि भाई कब ये वापस आएगा और कब मैं इसके हाथ में पकड़ाऊंगी ये बकेट की जा इसे भर के ला शी वेल्क्स और शी शेल्स के साथ। तो बस हम आए और लग गए काम पर। That's for you to eat. Oh, wow, wow, thank you. Bringing you more. Okay. Tired? You have given me the bag instead of this. It was such a struggle to hold this and get that. Oh, yeah, yeah. That's a lot. Yeah, they were trying to pee on me every time I caught them. Wow. It's their defense mechanism, I guess. Wow, how powerful. I found you those beauty. Wow, thank you. Okay. Oh, we need some kind of water. Need some water? Yeah, Sure. yeah. You want to have a rest first? Huh? Okay, come. There it is, the man of the house. One hand with I don't know how many kg paddleboard, the other hand with like more than 10 kg shellfish. It's working faster than me. How was the whole experience? Yeah, good. The waves were really strong here. Couldn't go further ahead. Yeah. So after doing some pedaling, now we were back towards Auckland, and on our way we had this, the Good Farm, another dairy. Let's go for some milk. Yes. Oh, look at this little cute. What is it? Common? That's nice. Ah, there comes the eggs. Yeah. तो भाई यहाँ पे आप बेसिकली क्या करो, आपको जो लेना आप ले लेते हो। अंडे लेने अंडे ले लो, फ्रूट लेने फ्रूट्स ले लो। यहाँ पे इनका रेट लिखा हुआ है, वो यहाँ पे पे करके और चले जाओ। ये वेजीज भी है, वेजीज लेनी है वेजीज ले लो, और दूध के लिए तो टोकन वहाँ पे होता ही है। और ये करने के बाद यहाँ पे अपनी एंट्री चढ़ा जाओ, ऐसा सीन है। Oh, look at this! We've got the honey as well. Oh, this little shop has a lot of surprises. Right? Yeah. Okay, let's go for it. What are we going to have? This is good. This is good. Yeah. Different than the last one. Yeah. It's even better than that. Oh. Tastes very fresh. Try it. Right? Yeah, you can taste the sweetness in it. Yeah, let's take 1 more liter. Worth it. Start. Yeah. Start. So we are taking 1 more liter. Have you noticed something? No. People, most of the times when she's recording me, she doesn't care where the camera is looking. Yeah, I'm shooting you. What?
Oh, sorry. Yeah, he's shooting you. What's wrong? Why there's no coordination between you and this camera? Huh? Because it's a female. और फिर ये ताज़ा ताज़ा दूध पी के हम निकल पड़े ऑकलैंड की तरफ। और भाई बड़े ही कमाल की बात बताता हूँ, जब भी हम अपना साउथ से किसी भी ट्रिप से वापस अपने घर की तरफ जाते हैं ना, हमें हमेशा ये सनसेट देखने को मिलता है। हालांकि ये कई बार परेशान होती है कि यार क्या है ये, आंखों में लग रहा है बहुत तेज़ है, जब भी हम ड्राइव करते हैं अपना घर की तरफ ये क्यों आता है, पर पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि बचपन में ही मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि जब मैं छोटा था और अपना स्कूल जाता था तो स्कूल बस में बैठ के मैं विंडो के बाहर सिर्फ सन को देखता रहता था, जिसकी वजह से मेरी आई साइट भी वीक हो गई थी। अब मुझसे ये मत पूछना कि ऐसा मैं क्यों करता था, किस लिए करता था, क्योंकि इसका आज तक भी मेरे पास खुद कोई जवाब नहीं है। लेकिन आज तक मेरे को ये ऑब्सेशन है सन के साथ कि मैं सन को कॉन्स्टेंटली ऐसे स्टेयर कर सकता हूँ बिना आंखें बंद किए। मतलब लोगों को तो नॉर्मली आंखों में लगता है ना जब वो सूरज की तरफ डायरेक्टली देखते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है जैसे कोई गोल चक्री सी है जो घूम रही है और उसमें उसको देखता रहता हूँ। और ये ऑब्सेशन मेरा आज तक कायम है, ऑलवेज चेजिंग द सन। हाँ, बाकी आंखें अब मेरी खराब नहीं है, मैंने ऑपरेशन करा लिया था, एकदम ठीक है। So after collecting all these seashells, we are back home and now we are going to boil them. Let's go. Once they open, You heard the lady. Once they open, they will be ready. And as you can see, they have started to open up now. They are ready to be eaten now. Look at them. Thank you for watching this vlog. See you in the next vlog. Bye bye.